फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। यूट्यूब चैनल सुनीता मेकओवर सो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे मैं आज कटिंग दिखाने वाली हूँ और ये कटिंग कौन सी होने वाली है आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। नाम मैंने डाल दिया है। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इनके लेंथ आप देख सकते हो, नीचे के एरिया लेंथ मैंने पूछ लिया था कि कितना शॉर्ट करना है। यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा करके और जितना लेंथ निकालना है स्टार्टिंग में मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा एवरेज लेते हुए, यानी कि जितना मेरा नोचिंग में या फ्रेशिंग में एक्स्ट्रा जाता है वो एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे लेंथ को निकालना है। ठीक है, मेरी ये स्टूडेंट है वो उससे मैं कट करवा रही हूँ। आपको अगर बराबर में यानी कि स्ट्रेट कट करवाना है ना, तो इस तरह से रबर बैंड की सहायता से आप स्ट्रेट हेयर कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा स्ट्रेट हेयर कट एक बार में हो चुका है। मेरी स्टूडेंट बहुत ही हैप्पी हो गई थी क्योंकि इन्होंने कट किया था यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इनसे पूछ लिया था मैंने कि आगे का कितना शॉर्ट करना है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए चलती हूँ, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ एक्स्ट्रा निकलता है, यानी कि जो मैंने कट करके निकाला है यहाँ पे, वो मैं हाथों से पकड़वा रही हूँ। वो इसलिए कि कुछ भी एक्सटेंशन वगैरह बनाने का काम आ जाता है, जो लंबा लंबा बाल निकलता है। ठीक है, मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ उससे, तो उसको मैं अलग से रख लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए और स्टार्टिंग से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और लास्ट तक देखने के बाद आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इनकी हेयर कटिंग की है और कोई भी सेटअप नहीं किया है, यानी कि ब्लो ड्रायर से सेट नहीं किया है, ना ही कोई मशीन लगाई है। सीधा मैं कटिंग करके यहाँ दिखा रही हूँ। और मेरे पास एक्चुअल में कई क्लाइंट्स बैठे हुए थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं कटिंग की थी और मेरे क्लाइंट्स के पास भी टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि बस कटिंग कर दीजिए और उसके बाद सेटअप नहीं करना है। सो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैं दिखा रही हूँ, कोई भी यहाँ पे सेटिंग नहीं किया है। जी हाँ, यहाँ पे कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। थोड़ी-सी मैं आगे की थोड़ी-सी नोचिंग कर रही हूँ, हल्का-सा शेप दे कर के, क्योंकि जो क्राउन एरिया का है और फ्रंट एरिया का है, फ्रंट में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में कट कर लेते हैं, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेते हुए चलते हैं और बाद में उसे सेट कर देते हैं दोनों को मैच करके। यानी कि क्राउन एरिया का मैंने कितना बड़ा लिया था और कहीं छोटा-बड़ा तो नहीं है, फ्रंट एरिया से, क्राउन एरिया से दोनों का गाइडलाइन लेते हुए इक्वल कर देना है, बस यहाँ पे हल्का-सा नोचिंग करते हुए शेप दे देना है। तो ये कंप्लीट हो गई है कटिंग मेरी। कैसी लगी? जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे स्टार्टिंग से आखिरी तक, जो लोग देखे होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा, और जहाँ पे डाउट लग रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लिख कर के ज़रूर पूछ सकते हैं कि कहीं से कोई आपको डाउट तो नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। चलिए, तो अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का घंटा ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।